Hello, Assalamu alaikum. How are you, students? That I hope that you all are doing well. So today we will start the reading of lesson number 9. That is, education is my right. Okay, so let's start the reading. So first of all, in this picture, you can see that here is a boy standing, hands reading some book, एंड प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे एक आप क्लासरूम का देख सकते हो कि यहाँ पे कचरा है, गंद है और यहाँ पे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो सफाई कर रहे हैं. ठीक है, आई थिंक इट्स अ स्कूल और क्लासरूम. So now, quick questions and discuss with your classmates that men and women both are important and equal parts of the society. Do you know of any strong women who made history? आपने क्वेश्चन बच्चों से करने हैं. इसके अलावा आप ये भी पूछ सकते हैं कि बच्चों ये पिक्चर आपको नजर आ रही है. कैन यू सी द पिक्चर? सो हाउ यू कैन एक्सप्लेन द पिक्चर? इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? ओके, सो ये क्वेश्चन आप बच्चों से कर सकते हैं क्विक क्वेश्चंस के अंदर. इसके अलावा रीडिंग अगर हम करें तो रीडिंग पे आ जाते हैं. Okay, so Mr. Akbar was shocked to see the condition of the school building: bricks, stones, slabs, rotten bits of wood, broken glass, rusting metal, and heaps of smashed tiles were scattered around the ground. The ground stood barren as nobody had thought to develop it. It was more like a horror house than a house building. It was the only school building in this town, but people were not interested in sending their kids for education. The school building was inhabited with everything but humans. The villagers were living a very hard and tough life. Children, especially girls, were deprived of basic rights. Mr. Akbar was a newly appointed teacher in this town. He cleaned the school ground and set the assembly area for students to come, but very few students attended. Mr. Akbar Mr. Akbar did not lose hope and went to encourage to village homes people to send their kids school. Many of them refused by saying that they had no time for education as they struggled to earn their bread and butter from dawn to dusk. Next day Mr. Akbar saw a little girl, Amina, sitting under the light pole and reading an old book. He was surprised. She was in fact a ray of hope. He went closer to see her, and asking, she told him that she faced many challenges to have access to education. One of the hardest challenges she encountered was poverty. Her father was a scrap picker and unable to bear her school expenses. Every day when her father returned home, Amina used to find old books from scrap to read. Her mother also supported her in studies and encouraged her to read. मिस्टर अब ये वाइल्ड रीडिंग क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो. यहाँ पे आप पूछ सकते हो स्टूडेंट से कि वेयर वाज अमीना सिटिंग एंड रीडिंग. ठीक है, वो कहाँ पे बैठी हुई थी, क्या पढ़ रही थी. सो आप ये क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट से, सो दैट दे कैन बी अलर्ट. ओके, नेक्स्ट है, unfortunately, there was no school for girls and she faced difficulties. Mr. Akbar appreciated her spirit of learning. He went to see her parents and promised to facilitate her. Amina's parents also assured Mr. Akbar help inter in arranging a meeting with other villagers. Soon a meeting was arranged. Amina and her parents encouraged the villagers to send their kids to school. Mr. Akbar promised them to teach their kids without any fee, and the kids would also get books and stationery from school. Despite his promise, the number of students hardly increased. The villagers did not send their daughters. Amina was the only girl in school. Sitting with so many boys was awkward for her.
but her parents were willing to do it for the sake of her education. On fine morning, Amina heard her parents talking about their landlord who has been bitten by a snake and admitted to hospital. Amina went to see him with her parents. The condition of hospital was no better than the school. Medical staff was not available, and the hospital was not even equipped with the proper facilities. A ward boy was attending the landlord carelessly. He was crying in pain. Amira rushed to him and removed his shoes. Then she took a handkerchief and tied the leg of landlord near the wound. She also told the ward boy to bring soap and water to wash the wound. Lastly, she covered the bite with a clean, dry dressing. Meanwhile, the doctor arrived and attended the patient. He examined the landlord carefully and told him that a little delay would have been dangerous for him. He asked Ermina how she had known what to do. She told him that she wanted to be a doctor and she used to read books about medical and first aid methods. She had recently read the treatment of snake bite and followed the instructions for the landlord. Everyone was happy because her intelligence saved the life of landlord, and it happened because of her interest in reading. Mr. Akbar appreciated her efforts, and the landlord promised to help fund the school in the village, especially for girls. Equal opportunities can bring success to the country, and development can only be when everyone is treated equally. सो बात यह है कि हमारे माशरे में औरतों की तालीम को जिस तरह से इनकरेज करना चाहिए, जिस तरह से उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, उस तरह से नहीं किया जाता। और अभी बहुत से ऐसे हमारे कंट्री के अंदर आप देख सकते हो कि ऐसे इलाके हैं जहाँ पे औरतों की तालीम को बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है और नहीं पढ़ाया जाता। पास में भी ऐसा होता था, स्टिल अभी तक ये प्रैक्टिस हो रही है। सो एजुकेशन जो है वो औरत की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितनी मर्द की ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा औरत की ज़रूरी है, क्योंकि औरत ने बच्चे पालने होते हैं, नस्ल संभालनी होती है, नस्ल परवान चढ़ानी होती है। सो एजुकेशन ऑफ वुमेन इज़ अ राइट, और एजुकेशन फॉर एजुकेशन इज़ अ राइट फॉर एवरीवन, हर किसी का राइट है। सो दैट ऑल अबाउट द रीडिंग। अब हम देखते हैं वर्ड्स मीनिंग, इसकी देख लेते हैं। वर्ड्स मीनिंग में आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं। स्मैश का मतलब ब्रेक होना, कुछ चीज़ टूट जाना पीसेस के अंदर। बैरन का मतलब होता है बहुत बंजर सा जो इलाका होता है, इसे कहते हैं। एनकाउंटर का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली बी फेस्ड और एक्सपीरियंस, कोई चीज़ इनकाउंटर करना, सामना करना। ऑकवर्ड का मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल सिचुएशन। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि जो बराबरी वगैरह ना ना करना। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि आपको कोई मौका मिले, कोई आपको चांस मिले, कोई हालात आपके लिए कोई साजगार हो, तो उसे अपॉर्चुनिटी कहते हैं। सो ये इसकी वर्ड्स मीनिंग थी। इसके अलावा बहुत से और वर्ड्स इसमें हो सकते हैं। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द लेसन। और इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे पॉइंट्स थे जो हमें जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। वो ये है कि एजुकेशन जो है वो एक बेसिक राइट है हर इंसान का, हर ह्यूमन बीइंग का। और जब तक आप एजुकेट नहीं होगे, आपका मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। तो तरक्की करने के लिए किसी भी माशरे या मुल्क को बहुत ज़रूरी है कि वो एजुकेट करे अपने लोगों को, और उसके अंदर फिर तखसीस नहीं कर सकते आप कि गर्ल्स को करना है, बॉयज़ को करना है। एज अ होल, एज अ नेशन, आपने हर इंसान को एजुकेशन मिलनी चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल आई विल कम बैक सून विद अनदर वीडियो, अनदर लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।